I think we are live now. Yes. Sorry for the 15 minutes delay. Usually I try to go live around 1 o'clock every Saturday, but today I was, kind of working with the CA and our team to have the right proper closing on the financial year. So it took a little longer and we were overrunning. So I did message on the community section that I will be starting this meeting at 1:15. So thank you everyone for finding time on a Saturday and tuning in. And as the title of the this live suggests, and since we were contemplating from a couple of months now, and basis all of your feedback, we have of course decided not to launch the two small cases we were referring earlier, which was Gulfi Wealth Wave, which was on the wealth management theme, and the green theme. So theme-based small case will hold because of the current market situations, and we're going to first focus on the factor-based, corn factor-based small case we already have. Right now, what we are launching in April, because a lot of you were asking yearly plans, and so of course, the small cases will have yearly plans from April. That's one. Also, this small case we are now launching that will have only have yearly plan because it is to do with slightly higher kind of investment amount and catered towards serious investors who have been a part of our journey from last 4 months and provided feedback that they need a little bigger ticket size, minimum investment amount, so that they have the opportunity to buy in the dips when the markets is in that correction mode. Uh, and do not really have to worry about a lot of rebalance, and that is why this new launch will be on a need basis rebalance. So six small cases, which are six factors in the concept of multi-factor investing, remain as is: alpha, momentum, quality, value, growth, and volatility, which is balanced. But this is a multi-factor portfolio where the factor which is the right factor in that market cycle would take the primary kind of component, the 60-70% component in that composition. And this is the need basis one, right? And this is also be one where there is no need for a weekly, say, rebalance or a monthly rebalance. And if the markets would like us to remain invested, as long as our coverage on that particular stock is intact in terms of no changes to the fundamentals, no changes to the any parameters, this will be an opportunity to add more via SIP route, which could be any small amount, of course, not the higher ticket size, any small amount, and buy in every kind of in the dip. So also I'll see if I'm live on YouTube just to see. Yeah. So Swapnil says, hi, Robin. Hi, Swapnil. Arup says, good afternoon, sir. Vishek says, good afternoon, Robin. अभी सही टाइम है वैल्यू इन्वेस्टमेंट गोल्फ स्पॉट में एंट्री करने का. Samir is asking. Mac is saying, hi, Robin. Hi, everyone. So, yeah, thank you. And so, as I said, this objective is, of course, to wish you Happy New Year, which is the start of a new financial year. I'm sure all of us and all of you in the last financial year, which was April 23 to 24 of March, had a tremendous run of equity markets where Nifty index as such had, good two-digit returns. A fabulous year kind of concluded with a great ending in March. Of course, the first 2 weeks of March was volatile and we were a little worried. But if you've seen the last 2 weeks of March and even the last week of March was very, very comforting. So a good entry into the new financial year. Volatility will still continue to remain. The reason being, as we all have been saying every week, that election year है, बजट फिर से आएगा. सो अभी भी अगला क्वार्टर एंड अब तो रिजल्ट्स भी आने लग जाएंगे, राइट? बिकॉज द क्वार्टर विल बी फिनिशिंग नाउ इन मार्च, सो रिजल्ट्स विल स्टार्ट कमिंग इन 10th of April, 15th of April, द कंपनीज रिजल्ट्स. सो अब तो रिजल्ट सीजन भी आने वाला है, इलेक्शंस भी हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, कैंपेनिंग चल रही है.
So that way I think हमारे portfolios ने भी काफी अच्छा in terms of small cases काफी अच्छा recovery हुआ in the last couple of days, and जो 19 का rebalance था on monthly portfolios is now kind of bearing fruits for us in terms of slow and steady kind of growth. But the whole objective of coming live was to address जो भी आप लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे या हमसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे कि आर वी लॉन्चिंग एनी थीम बेस्ड स्मॉल केस. नो वी आर नॉट. सो नो प्लान्स फॉर ग्रीन थीम और वेल्थ थीम फॉर नाउ. We will revisit it in the next quarter or half year. We'll see when. But yeah, the seventh edition we are doing along with six factors is a multi-factor portfolio, which is need basis portfolio, right? That is the update from our side. I'll take questions if you have any. Uh, so feel free to, ask here on the YouTube live, and also in April, from April onwards, at the month end, every month end, I would be doing exclusive Zoom webinar for all of our investors, right? And I would be doing it per the factor, which means if you are kind of invested or subscribed to our service on Alpha Blend, you will have your own Zoom webinar invite at the month end. Every month end, I would want to speak to all of you. Also face to face, so that I would appreciate if you just give me 1 second. Sorry, I was sneezing, so I just kind of went on mute. Right, yeah. So yeah, so from April, you will see eventually invite coming to you for every monthly check-in with all of our esteemed paid users who have subscribed to our service. It would be specific to the methodology you have invested in terms of the research service. So if you are a balance basket kind of subscriber, you would have a monthly meeting where, of course, you can join that Zoom. It's absolutely free, and it's basically a kind of a combined meeting to take your questions. I would see how we kind of play it out, because I would like that. I appreciate that you may not like other participants know you, or so we will see how we manage that privacy of your data, and you're not exposed to people which you do not like to get exposed to. So we'll see how we organize it. But the idea is, because it is very difficult for a one-to-one meeting with all the investors, and I am absolutely happy if you want to do it, which is via the meet.golf app link, which you can anyways meet.golfy. I'll just ping anyways, which I ping every time. So this link you can anyhow use to kind of book a meeting with me and my team. And Tarun Pal is also saying goal for YouTube channel. Yes, Tarun, goal for YouTube channel is already there now. We have not formalized it, but my channel will continue because my channel will be more broad in terms of I may speak about 10 different things in the times to come. But goal for YouTube channel, we would like to make it, we want to kind of bring it out in a way that we can, once you start, we maintain a consistency there, because my channel already has a lot of content on mutual funds, on financial plan, on some interviews with the RIAs in India. So you have some kind of content to absorb when you come to my channel. YouTube channel of Golfi would be very new, and we were thinking if we can have a podcast kind of a series there, and even some very regular updates on market, we will then launch it. So it's there now. We have kind of launched it, but it's in kind of pilot stage there. So not officially adding into any of our communication yet. And Mr. AS has questions on my HSBC profile. So you can please go to my LinkedIn, Mr. AS, and I'll ping my LinkedIn link. You can go through my entire career history there, starting from 2008, what I've been doing. And of course, you can go to Smallcase, where I had my description as well. So, and you can, of course, book a meeting with me and we can have a chat. But yeah, please go to the LinkedIn and search for my name, and the history would be available. Vishesh, good afternoon, Robin. Mac, hi, Robin. Tarun, YouTube channel. Yes, Sohan. So this is Sohan. Good afternoon. Hi, Sohan. Good afternoon.
समीर सिंह सर, फुल अमाउंट एक साथ डालना है, कैसे डालना है, प्लीज हेल्प। यस समीर, सो मैंने ये बात पैसे पहले भी कवर करी थी, पिछले वीक भी। मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है, क्योंकि एज यू वुड हैव नोटिस्ड कि थोड़ा एंड बात, आई मीन जो हमारे पिछले लाइव कई सेशंस रहे, वी टॉक्ड अबाउट मनी काइंड ऑफ मूविंग फ्रॉम some small cap to large caps, mid caps, from overall AUM perspective of mutual fund industry, also because of the stress test and because of the new lump sum being stopped in those small cap funds. तो और इलेक्शन ईयर है एंड प्रॉफिट बुकिंग हुआ अभी तो मार्च में, we were seeing a lot of people were exiting and again adding, I mean, to kind of offset their losses. I mean, जो अभी tax loss harvesting जो अभी सब करते हैं मार्च में, all of us do it to kind of see if we can harvest that. Or April में again, I'm sure the fresh kind of investments will start. But absolutely great period to be in 2024. I mean, I'm very, very optimistic about the next 7, 8, 10 years from here in terms of the growth potential, right? So as long as you are absolutely comfortable with the volatility, which will be there for a good period, right? You can there's nobody who can time, nobody can time the market, and therefore if you're okay with the volatility, I mean, every time is good. If you are not okay with the volatility, we are still saying that you remain little bullish but cautious, but cautiously bullish, and therefore एक साथ अमाउंट मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, so that you have money at hand, right? So that is what will be needed once the portfolios are down. Alpha for Mac is return of -5. I'm failing to invest more, as some of the stocks are not moving and they are stubborn. ओके मैक, ठीक है, गिव इट सम टाइम, डोंट ऐड, आई मीन मेरा तो कैसे कोई डायरेक्ट एडवाइस ऐसे भी नहीं होता कि आपका अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, राइट? वी आर ओनली ऑफरिंग अ रिसर्च एडवाइस, एंड बाकी जो डिसीजन है वो आपका अपना है. बट इफ आई वर यू, फॉर एग्जांपल, आई वुड एब्सोल्युटली वांट टू गिव सम टाइम. I'll keep my cash part intact, बिकॉज मार्केट्स में जब ये अभी एक क्वार्टर और निकल जाएगा, अप्रैल में जून, पूरा क्लैरिटी होगा, गवर्नमेंट बन चुकी होगी, थिंग्स वुड अगेन बी काइंड ऑफ इन अ क्लीन वन डायरेक्शन. आई थिंक दैट इज अ गुड टाइम, राइट, टू काइंड ऑफ कंटिन्यू टू ऐड मोर. प्रतिभा जी पूछ रही है मंडे रीबैलेंस होगा. मंडे रीबैलेंस आई थिंक स्किप है. आई एम नॉट श्योर, आई चेक, बट आई थिंक स्किप होगा. कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और गुड स्मॉल केस पोर्टफोलियो, विच वन यू प्रेफर? टोटली डिफरेंट करो ना आप. अभी एक अपने फाइनेंशियल प्लानर, एक अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें, उनसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाएं, देखिए कि आपका जो टोटल एसेट एलोकेशन है वो किस किस एसेट्स में है, एंड आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका एक्सपोजर किस किस इंस्ट्रूमेंट पे है, वेदर इट इज रियल एस्टेट, इक्विटी, डेट, राइट, एंड आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका करंट टाइम एट हैंड, आपको कितना है इन टर्म्स ऑफ प्लान अचीविंग योर गोल्स, उसके हिसाब से यू कैन ऑफ कोर्स डिसाइड कि आप के एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टी किस तरीके से ग्रो करती है, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सेट्रा. Rajshekar, good afternoon, Ravi Singh. Hi, Ravi. Vishek is saying, I'm subscribed to Alpha around mid-Feb. It's around, okay, 6, 7 negative. I'm planning to invest more in coming month. Please suggest in terms of rebalance, Alpha blend plus balance or both plus multi-factor. विषय थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप चाहो तो meet.golfi.app ऐप पे आके मीटिंग बुक कर सकते हो, वहाँ पे फेस टू फेस बात कर लेंगे. बाकी मेरे जो मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन से आप पूछना चाह रहे हो कि आई वांट टू प्लान टू इन्वेस्ट मोर इन अपकमिंग मंथ्स. ऑलराइट, दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी. प्लीज सजेस्ट इन टर्म्स ऑफ रीबैलेंस, अल्फा ब्लेंड में करें या बैलेंस बास्केट में करें, शायद आप ये पूछ रहे हो. ऐसे समझ नहीं पाऊंगा मैं कि मैं मतलब मेरा तो क्या रहता है कि अल्फा ब्लेंड या मोमेंटम, आपको पता है दोनों वीकली रिबैलेंस होते हैं, सो थोड़ा चर्निंग ज़्यादा हो जाता है उसमें. और बैलेंस बास्केट एक वैसे भी रिलेटिवली लो वॉलेटाइल है, बिकॉज उसमें फैक्टरी वॉलेटिलिटी है. मल्टी फैक्टर तो एक बार लॉन्च हो जाए उसके बाद हम उस पर बात करेंगे. आप देखना कि इफ इट सूट्स योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इफ इट सूट्स योर फीस कॉम्पोनेंट, एंड आई थिंक व्हाट आई सजेस्ट, आप meet.golfi.app पे कभी भी कोई भी शेड्यूल बुक करके हमसे बात करिए. ध्रुव इज सेइंग प्लीज गिव योर व्यू विच स्मॉल केस विल गिव बेस्ट रिटर्न इन द नेक्स्ट 6 मंथ. हाई रिस्क इज ओके बट विच वन विल गिव बेस्ट? अगर आप मेरे स्मॉल केस की बात करें तो मुझे तो मतलब नो बडी नोज कि कौन सा स्मॉल केस बेस्ट रिटर्न देगा, बिकॉज बेस्ट रिटर्न का जो साइकिल है वो ऑफकोर्स आपको अगले 6 महीने में चाहिए, और अगला 6 महीना अगर आप देखोगे तो 3 महीना तो एक वो वॉलेटाइल पीरियड हो गया, जहाँ पे देर आर ऑफ कोर्स
एज दी जो हमारे 5 साल में इलेक्शंस होते हैं वो पीरियड चल रहा है, बजट और वगैरह चलेगा दोबारा से, और जो अगले 3 महीने वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आएगी। इज द पीरियड व्हेन जहाँ यूएस के जो रेट्स कट एंटिसिपेट हो रहे हैं कब से, कितने कट करेंगे, वो बीट पीरियड आ जाएगा। तो ओवरऑल तो लगता है कि हाँ, एफआई मनी विल स्टार्ट मूविंग इन गुड शेप इन इंडिया वंस द रेट्स आर कट। बट मैं ऐसे बता नहीं सकता क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है, टू बी ऑनेस्ट ध्रुव। हर फैक्टर का एक पीरियड होता है। देयर इज अ पीरियड व्हेन वैल्यू फैक्टर विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, बिकॉज वहाँ डाउन साइड लिमिट हो जाती है, बिकॉज आप ऑलरेडी उन स्टॉक्स पे बैठे हो जो वैल्यू बायर्स हैं, और उस समय आपके जो अल्फा जनरेटिंग स्टॉक्स होंगे या मोमेंटम स्टॉक्स होंगे वो शायद अच्छे खासे नीचे मोमेंटम में आ रहे होंगे। आई मीन बिकॉज देवर एनी हाउ काइंड ऑफ इन दैट वेरी अवे फ्रॉम मीन, तो वो जब करेक्ट होते हैं तो अभी अच्छा खासा नीचे आ जाते हैं। तो दैट वे आई डू नॉट नो if that I'm sure that didn't answer the question, but that is what it is. आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप एब्सोल्युटली हमें मीटिंग बुक कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। स्मॉल केस पे आएगा क्या नाम? या स्मॉल केस पे आएगा राजपूत जी। स्मॉल केस पे आने में शायद 1-2 दिन लग जाएंगे। हम लोग लॉन्च उसको फर्स्ट को करेंगे, तो स्मॉल केस में डिस्कवर करने में आई थिंक वी विल रिक्वेस्ट स्मॉल केस टीम द सेम डे टू लिस्ट इट। शायद 1 दिन और लग जाएगा। माइक्रो साइट जो है हमारी गोल्फ रिसर्च डॉट स्मॉल केस डॉट कॉम, उस पर तो पहले आ जाएगा, बट उस पे क्या बोलते हैं, स्मॉल केस की ऐप पे आने के लिए आई थिंक 1 दिन और लगेगा। राजपूत जी ने पूछा, सोहन सर बोल रहे हैं, एज पर यू न्यूज़ न्यूज़ इन्फ्लेशन इज ईजिंग, इज इट अ गुड साइन फॉर रेट कट? हाँ, गुड साइन है, और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल हो रहा है, इज अ गुड साइन। बट रेट कट तो करनी ही है। मतलब इफ यू लुक एट, आई मीन आई डोंट नो कितना आप उसका हिस्ट्री देखो, बट रेट कट तो अल्टीमेटली हैज टू हैपन, राइट, फॉर द US economy to kind of sustain in some form। एंड अभी इतना इन्फ्लेशन है, उसके लिए बढ़ा के रखे रेट, लेकिन अल्टीमेटली जब रेट कट होंगे तो उसका जो पहला फायदा होता है वो इन अ वे एफआईज का, जो वहाँ तक इम्पैक्ट की बात होती है इंडियन मार्केट्स पे, तो वो हमें मिलता ही मिलता है, और वो आगे भी आई एम श्योर एंटिसिपेटेड है। लेकिन अब 2 कटें या 3 बार रेट कट हो या 1 बार रेट कट हो, वो अगले 2 साल में काफी गुड एरिया है टू कीप एन आई ऑन। Mr. A is saying, I don't know about the entire team, which is not available on the website of Golfi. Yes, you're right. Knowing management team is important for me before subscribe. Absolutely, Mr. A. Yes, I agree. हमारी वेबसाइट थोड़ा रीडिजाइन भी हो रही है इस समय, और वेबसाइट इज नॉट गिविंग द सेम kind of output which we intend to give. So beta stage में है, as you know that the website is in beta stage, and we are pretty new in the system, right, in terms of 3-4 months of our kind of operations launch. And तो आप Mr. Reyes, what I'll recommend, absolutely website has to get updated, but आप को अगर और ज़्यादा डाउट्स हैं तो you feel free to book my meeting with me and call me, and we can have a catch up. Economics Nursery, hi sir, all the best for me. Thank you so much, Economics Nursery channel. Dhruv is saying big some investors having 1 crore cap PF, saying this year will be of large caps. Basically, they won't underperform small cap like 23. Okay. Also, FI invest in large cap. What is your view? Yeah, you are right. Uh, अगर आप एफआई का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेरी हाई इन लार्ज कैप्स, बिकॉज अल्टीमेटली इंडेक्स, चूंकि जो जो इंडेक्स के फंड्स हैं, राइट, निफ्टी 50 फंड समझ लो आप, एफएनओ मार्केट के जो फंड्स हैं वो सब लार्ज कैप। इंडिया में अगर आप टोटल निफ्टी 100 यूनिवर्स देखो, टॉप 100 कंपनीज जो लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं, वहां पे एफआई का जो होल्डिंग परसेंटेज है वो मच हायर है। तो एफआई पैसा आता है तो एब्सोल्युटली लार्ज कैप्स में पहले आता है। देखिए होता क्या है ना, जब जब मार्केट, जो कि पिछले साल थोड़ा डिफरेंट हुआ, बट जनरली क्या होता है, जब बढ़ते हैं तो पहले लार्ज कैप्स, फिर मिड कैप्स, फिर स्मॉल कैप्स, फिर जब गिरते हैं तो पहले स्मॉल कैप्स, फिर मिड कैप्स, फिर लार्ज कैप्स। 2023 was a fantastic year where we saw a lot of inflows from DIs, right? As you would be noticing कि हर महीने नंबर्स आते हैं कि 18,000 करोड़, 19,000 करोड़, 20,000 करोड़ का SIP आ रहा है। एंड इफ यू सी कितना स्मॉल केस में ही गया वो पैसा, राइट, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनली जो एक चेंज हो रहा है पूरा इकोसिस्टम, जहाँ पे गुड फंड मैनेजर्स, इवन इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, राइट, आई मीन किसी को ऐसे सच में
डायरेक्टली रिकमेंड तो नहीं कर सकता, ना ही कर रहा हूँ, बट मतलब फॉर एग्जांपल हम भी म्यूचुअल फंड हाउसेस के फंड मैनेजर्स को भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या, हम भी डेटा कुछ क्रंच करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा का फ्लो कहाँ हो रहा है, किस फंड में हो रहा है, किस तरीके से स्टॉक्स मूव हो रहे हैं, एंड किस तरीके का डेटा इनफ्लो आ रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का फाइनेंशियलाइजेशन कैसे हो रहा है, इंडियन इंडियन हाउस होल्ड्स का. सो ऑल दैट यू नो ईयर 2024 एंटिसिपेटेड है कि 23 इतना बड़ा, 23-24% का अगर निफ्टी ने रन दिया है तो और वो दो कंटिन्यूस साल हो गए फॉर इंडेक्स टू काइंड ऑफ गिव दैट काइंड ऑफ हाई रिटर्न. सो इट वुड बी गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो. बट ऐसा होता है ध्रुव कि देर आर ऑलवेज पॉकेट्स राइट वेयर यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज. अब वो लार्ज में आपको मिले अपॉर्चुनिटीज या आपको स्मॉल में मिले, आई थिंक दैट शुड बी दी कोर फोकस फॉर यू. हम तो सिर्फ, आप ऐसा सोचो, आप 6, 7, 8, 9, 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो, राइट. आप इंडिया में 6,000 कंपनीज हैं जिसमें मान लो 100 लार्ज कैप कंपनीज हैं, रिमेनिंग 150-200 आप समझ लो मिड कैप और फिर स्मॉल कैप, अगर आप ऐसे सोचो तो. आई थिंक जितना आप उसको एज अ सब्जेक्ट लोगे, इफ यू हैव द इंटरेस्ट यू कैन कंटिन्यू टू डिग डीप एंड डीप. बट अगर जहाँ तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, आप जितना सिंपल रखोगे, आप आपको ब्रॉड मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, आपको ये लार्ज कैप में जो एफ आई आप बोल रहे हो पैसे लगाएंगे, आप इंडेक्स फंड ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल. रिकमेंड नहीं कर रहा बट इंडेक्स फंड ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल. वहाँ पे आप उस ग्रोथ को उसके साथ रहोगे. जहाँ तक बात है यू डूइंग एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो आप स्मॉल केस के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करो, एक्टिव म्यूचुअल फंड, वहाँ पे यू कैन ऑलवेज हैव सम फ्लेवर ऑफ मल्टी कैप फंड और a small case for example which is a multi cap focus as an example, right. ऐसे कर सकते हैं ध्रुव. Rajput is saying subscribe to Alpha Blend. Okay, my suggestions is please do please remain invested. I think that's what I may say. सजेशन तो यही है कि आप थोड़ा लंबा टाइम दीजिए पोर्टफोलियो को. मैंने इसे लंबा टाइम दीजिए, कम से कम 6 महीना, 9 महीना, साल भर तो दीजिए, सो दैट यू नो कि और पैनिक नहीं करिए. माई पैनिक तो वैसे भी मार्च में जो हुआ, वो फेब्रुअरी मिड टू मार्च मिड, राइट, वो पीरियड जो रहा was that period where all of our resilience also was kind of tested, क्योंकि बीच में वो, मैंने पिछली वीडियो में बोला कि वो नी जग के बदले एक नी ब्रेकिंग जैसा एक मूव था. बट आई थिंक markets are designed to go up. We as the country is positioned in such a good way, so ड्रॉ डाउन तो देखो होते हैं पोर्टफोलियो में, और वो होते भी रहेंगे, राइट. देन दैट इज अ गुड साइन दैट शोज काइंड ऑफ आर एंड इवन अगर आप when you remain invested there, you are participating, you have seen those cycles. क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स अगर आप देखो इंडिया में, जो डीमैट अकाउंट का ग्रोथ हुआ पिछले 4 साल में हुआ, राइट. तो आप तो जो इन्वेस्टर्स 4 साल में हैं, उन्होंने वो साइकिल्स ही नहीं देखी हैं पुरानी. सो इट विल बी गुड कि आप जितना जल्दी वो साइकिल देखोगे, उतना जल्दी यू ऑल्सो गेट मैच्योर टू पार्टिसिपेट फॉर अ लॉन्ग टर्म. Ravi Rajput, your quant-based mathematical model, build the portfolios or human intervention. So those stages हैं Ravi. Of course, we are kind of research-based work, which means that हमने अपना एक 5 स्टेज प्रोसेस बनाया हुआ है, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, जिसमें फंडामेंटल, टेक्निकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब तक हम एक स्क्रीनिंग करते हैं टू गेट टू अ लिस्ट. उसके बाद हम ऑफ कोर्स वी रन आवर ओन क्वांट बेस्ड मॉडल्स जो डिसाइड करते हैं कि जो फैक्टर, जैसे अल्फा एक मैथमेटिकल जेंसिस अल्फा एक फैक्टर है, जो आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो. वहाँ पे ऑफ कोर्स वी काइंड ऑफ लेट द मॉडल काइंड ऑफ जनरेट दी स्कोर्स, अल्फा स्कोर्स, एंड देन कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो by making sure that it is concentrated. At the same time, it is diversified so that same sectors repeat नहीं हो रहे हो, diversification भी आ जाए. So that is a mix. Basically, it's a mixed model, Ravi. Minal is asking, I'm going to subscribe to value investing. How is the multi-factor different to it when it's launching? Okay. Minal जी, launching it on 1st 2nd April. फर्स्ट को ही है हमारा प्लान, बट मुझे ये नहीं पता कि वो प्रोडक्शनाइज होते होते स्मॉल केस में 2 तारीख को जाएगा या 1 को ही आ जाएगा, तो 1-2 मान के चलते हैं. It's a need basis one. No fixed rebalance date, unlike our 2 existing weekly and 4 existing monthly. एंड आप वैल्यू में सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ओके, थैंक यू. डिफरेंट कैसा है कि अभी जो हमने ये 6 पोर्टफोलियो बनाए हैं, 6 स्मॉल केस है हमारे, ये पर फैक्टर
पर फैक्टर फोकस है, जहाँ पे नेम ऑफ द पोर्टफोलियो डिटरमाइन 70% ऑफ द वेटेज इन दैट पोर्टफोलियो। वैल्यू इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो का मतलब ये हुआ कि उसमें हम काफी ध्यान देते हैं कि जो आप के कॉम्पोजिशन है उसमें 70% कॉम्पोजिशन वैल्यू बाइज हैं, राइट, दे आर एट द राइट वैल्यूएशन, हैव सम लेयर ऑफ से अल्फा। जो 30% रिमेनिंग कंपोनेंट है वो उस समय का फैक्टर क्या हेल्प करेगा टू काइंड ऑफ गेट यू टू सम काइंड ऑफ अल्फा। अब उस समय मोमेंटम भी एक फैक्टर हो सकता है जो 30% में आए, एक क्वालिटी भी वो एक फैक्टर हो सकता है जो एक उसमें आए, सो दैट इज विल बी द डिफ मल्टी फैक्टर विल बी combination of this factor, and the factor which is relevant for that point in time, could be quality, could be momentum, could be alpha, would take the 70%. That is how it would switch on the factors. Is Our thoughts are behind it. Okay, Sahil saying, hi Robin sir, I'm investing in Alpha in query with the credit pick out the stock. How do you analyze the stock? What are the key factors? Sahil, explain मैंने किया है प्रोसेस, वैसे मैं फिर से आपको भी समझा सकता हूँ if you want to book a meeting। और हम अल्फा के ऊपर भी जो अभी बात हुई थी चैनल लॉन्च की, तो हम लोग अभी स्मॉल केस पे आप देखोगे तो यू विल फाइंड मेनी स्मॉल केस मैनेजर्स हैव अ वीडियो लिंक एडेड टू ईच स्मॉल केस। वो भी हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। हम लोग विद इन मंथ, इसी मंथ में आपको हर स्मॉल केस के में वो यूट्यूब लिंक लगा देंगे, जिससे कि आप खुद जाके वो उस स्मॉल केस की जो फिलॉसफी है, जो रिसर्च अप्रोच है, उसको हम सिंपल शब्द में आपको समझा पाए। साहिल ने का आंसर वो क्या है दिया, की फैक्टर्स यू लुक फॉर। हाँ, मैं आपको मतलब साहिल आई कैन एक्सप्लेन टू यू वन टू वन, एंड ऑल्सो वी विल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन इट वाया the specific video for that small case. Mayur is asking, hello, multi-factor will be high volatility. Mayur, multi-factor will be mix of it. Just rebalance पे उसमें क्या composition है, देखिए volatility तो रहेगा हाई। स्मॉल केस एज अ प्रोडक्ट में, जो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इंडिया में, और अगर उनका अगर आप वैसे भी मार्केट वोलेटिलिटी देखो, तो वो जो कंप्यूटेशन होता है वोलेटिलिटी का, वो हाई कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि क्योंकि हम उस समय उसका और फैक्टर चूज कर रहे होंगे जो उस समय प्रोमिनेंट है। हो सकता है उस समय जिस जिस पीरियड पे वो इस जिस जिस पीरियड पे जब वो रीबैलेंस हुआ है, तो देयर वुड बी आई एम श्योर टाइम दैट it has more low volatile stocks, and that time maybe the label will be coming as low volatile, but abhi ke liye I think the recent composition will be, I think, high volatile. गुड यूट्यूब चैनल अमन गुप्ता, मैंने ऊपर जी आंसर किया अमन जी, या प्लान है, एंड इट शुड बी देयर soon, and it's there now. We have kind of put the channel on with the image and what you call banner and all, उसमें videos upload करने। Dhruv is saying I have to subscribe multi, you was rely on investment momentum, okay, how much percentage investment? Dhruv, 50-50 मैंने तो जनरली बोलता हूँ, ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट 100, अगर आपको 100 रुपीज़ हैं तो 35-35 इन्वेस्ट करके रखिए दोनों में, और जो रिमेनिंग 30 है उसमें से 15 को जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, बाइंग एट लोअर प्राइस, 15 रखिए। 15 हमेशा अपने पास रखिए, 20-15-20, सो दैट यू नेवर नो व्हाट इज द लो पॉइंट। सो आपके पास एक बार कैश होता है तो यू ऑलवेज हैव दैट अपर हैंड, एंड यू आर नॉट स्टक। सो उस तरीके से यू कैन डिवाइड योर 100 इनटू, हम पिछले बार ये बोल रहे हैं, पिछली बार से, कि 100 को 2 में डिवाइड कर लीजिए बड़े फेज में, 50-50। 50 तो आप एक्चुअली अगले क्वार्टर के लिए रख दीजिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहेगी। 50 को आप किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। या गोल्फी ऐप भी राजपूत जी, आई एम श्योर बीटा वर्जन है, डेवलपमेंट में है, काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। यूर इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप, थैंक यू, यूर हैप्पी टू हेल्प, प्लीज डू रीच आउट अगेन ऑन व्हाट्सएप, ड्रॉप मी एन ईमेल डायरेक्टली एट aryarobin@golfi.app। आपको आपको जहाँ लगता है आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, विल बी ग्लैड। थैंक यू सो मच। How many stocks will be there in your new small cap? Please tell ratio of small, mid, and high, and also risk reward ratio. Um, Thanks, Robin. Is Golfi on Instagram too? Yes, Golfi is on Instagram as well. Golfi is on Twitter, Instagram, Medium, Reddit, uh, YouTube. I mean, all of the channels. Just that uh, we have not really started social media as such. It's just only my channel where we speak about Golfi. But Golfi, if you go to Instagram, you'll find from last kind of 6-7 months,
There are informative posts, right, on generic things. Uh, सो द आइडिया इज स्लो एंड स्टडी बिल्ड कर रहे हैं, सो कोई जल्दी नहीं है। और आई थिंक वी जस्ट नीड अ वे टू कम्युनिकेट विद यू एज आर यूजर्स, एज आर सब्सक्राइबर्स, एज आर काइंड ऑफ बिलीवर्स इन आवर स्टोरी। उसके लिए व्हाट्सएप मुझे काफ़ी इफेक्टिव मीडियम लगता है, यूट्यूब मुझे बहुत इफेक्टिव मीडियम लगता है। एंड वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ कि गो मैड विद मार्केटिंग, और वो हम कुछ नहीं करते, राइट? आप कहीं नहीं देखोगे हमारे, हम वी डोंट रन एनी एड एनीवेयर so far, right? Zero ads we are running. Because business of money is more trust-based business, right? I don't think it can be built with running ads or promotions. I think so. So, इसलिए थोड़ा slow and steady is the model. Um, Sohan saying how many stocks will be there? Sohan जी 9 stocks का है, I think 8 to 9 रेशो मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको आई थिंक मंडे बता पाऊंगा, जब हम फाइनली कंप्यूट करके उसमें उसको अपडेट कर चुके होंगे। सुभाशीष, व्हाट डू यू डू व्हेन योर conscience says to sell a stock but your quant is to hold it? You face a situation where you want to override quant decision based on your experience. Yeah, Shivashish, we have a layer of human intervention, absolutely, because that is how um, Indian markets are because of the, say, lack of liquidity, lack of the kind of I mainly say liquidity, कि एक बल्क डील, एक ब्लॉक डील, एक बड़ा रीबैलेंस कैन हैव अ प्राइस में स्लिपेज, राइट? तो इंडिया में इतना वॉल्यूम ही नहीं है जहाँ पे आप एक मॉडल को you know mature कर पाओ. So it will take time, it is taking time. In a lot of quant based work has happened over so many years, even from an academic side, right? One of the professors of IIT Kanpur is also is a mentor on Golfi, as you would know and you should know. So professor वो भी हमारे साथ, he is trying to help us with the multi-factor investment research. So इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, इतना लिक्विडिटी है नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि quant is saying and और हम और quant आपस में, and that's why we are here as actively managing that, right? हमारा अपना एक रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, वो क्वांट नहीं करता। क्वालिटेटिव रिसर्च स्टिल हैज अ लेयर, वो जो हम पहले ही सॉल्व कर देते हैं, अवर 5 स्टेज प्रोसेस हम पहले ही उस लेयर को सॉल्व कर देते हैं। देन वी काइंड ऑफ गेट टू द क्वांट ओनली आफ्टर द बेसिक क्वालिटेटिव चेक्स आर डन। व्हाट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट? अगर आप अभी वॉलेटिलिटी के लिए ओके हैं तो एवरी डे इज अ गुड डे, एंड इफ यू आर नॉट ओके विद वॉलेटिलिटी देन अभी तो साइडलाइन से बैठने में भी कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आपको लगे कि कहीं फोमो हो तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, एज आई सेड, इनटू 3 पार्ट्स। एक पार्ट अभी इन्वेस्ट करिए, एक पार्ट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे करिए, और एक पार्ट इन द जब स्टेबिलिटी हो नेक्स्ट हाफ में करिए ईयर के। Mac is asking when will Golfi app be fully launched so that we can directly invest from app and get updated? प्लान ऑफ एक्शन में है, गोल्फी ऐप पे काम काफ़ी चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। अभी भी हमारे 2 वर्जन्स इस समय दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अंडर रिव्यू चल रहे हैं। आई मीन अ न्यू वर्जन इज गेटिंग आउट सून. It is on high priority. It is on high priority for us to close it in the Q1 of next year as part of our book of work. So मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जून एंड तक वो स्टेबल हो जाएगी। चलिए, अच्छी मज़ा आया, क्वेश्चंस भी लगातार आ रहे थे, तो इट वाज गुड फन टू बी टॉकिंग कंटिन्यूसली। और कोई क्वेश्चन है? शिवश्री इज सेइंग थैंक यू शिवश्री फॉर योर क्वेश्चन एज वेल। एंड और कोई क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड today's video? And again, Happy New Year. Great. Wish you a very, very successful, prosperous financial year, which is starting, on Monday. Okay. Shubhashish, I think आप एक बार, if you don't mind, can you maybe book a Golfi team meeting? एक बार वहाँ पे बात कर लेंगे। आप करो, which market would you recommend for long-term wealth generation, something that is less volatility and preservation of capital is preferred more than alpha? I think
इफ आई वर यू शुभाशी, स्मॉल केस में जो एक ऑल वेदर, मीन अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन राइट, जो भी इंडेक्स को काफी रिप्लिकेट करते हो ना, जो कि इंडेक्स को, बिकॉज इंडेक्स इटसेल्फ में इतना ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, जो जिसका डाउन साइड बहुत प्रोटेक्टेड रहता है, बिकॉज इंडेक्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ अ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, एंड अपसाइड तो इंडेक्स हल्के हल्के ग्रो करते हैं। तो अगर आपको लो वॉलिटिलिटी चाहिए, आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द मेन गोल, then any passive fund is the way to do. Mr. A saying, can I combine value and for the next 5 years with? Yeah, I mean, ASG you can combine, why not? But देखिए, ऐसे ना, आप आपका फाइनेंशियल प्लानर से आप रिस्क प्रोफाइल एसेस कराइए, आपको हमसे बात करना है, आप हमसे बात करिए टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड मोर। किसी के लिए 3 लाख, 3 लाख इज अ बिग अमाउंट, किसी के 3 लाख इज अ पार्ट ऑफ द गेम। सो ऐसे एब्सोल्यूट अमाउंट से कुछ क्लैरिटी नहीं मिलता कि वो किसके लिए कितना ठीक है। थोड़ा सा इसको डिटेल डिस्कशन पे ही आप जो एडवाइजर हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, या आपके जो फाइनेंशियल प्लानर हैं, वो कंपाइल कर पाएंगे। आप हमसे भी बात कर सकते हो, जहां तक हम हेल्प है हम हेल्प कर सकते हैं। जो स्टॉक्स आप पिक करते हो, उन्हें पिक करने का पीडीएफ शेयर कर सकते हो क्या बेसिस पर उन्हें सेलेक्ट किया? हाँ जी चेतन जी, तो जनरली हम उसको भी फॉर्मलाइज कर रहे हैं। जनरली हमें एज अ रिक्वायरमेंट ऑल्सो हमें वन पेजर तो एक मेंटेन करते ही हैं अपने हर कवरेज का, कि हमने वो स्टॉक क्यों ऐड किया। शेयर कर सकते हैं कि नहीं, वो मैं एक बार चेक कर लूंगा। बट यस, बट यू आर वेरी वेल काइंड ऑफ, यू हैव द राइट टू आस्क, राइट, कि आपने ये क्यों पिक किया, आपका क्या थॉट है। सो वो तो हम वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, राइट, कि हमने क्यों पिक किया। ओके, शिवाशी सिंह, श्योर। ऑलराइट चेतन, होप आई आंसर योर क्वेश्चन। होप, आई थिंक अब ये मीटिंग काफी लंबा हो गया है, 2 बजे मेरा एक और मीटिंग है, सो आई थिंक आई विल टेक अ ब्रेक, एंड थैंक यू सो मच Pratima. I'm expecting, wow. Okay, very nice, Pratima. She is expecting great return in 24-25 because US का rates cut होने वाले हैं, and she is planning to invest 1 lakh per month. Very nice. Okay. Yes, many small caps upload research report and needs rebalance. अच्छा ठीक है ध्रुव, मुझे मैं भी एक दो एग्जांपल्स देख लेता हूँ, एंड इफ दैट इज द केस, या वी शुड, व्हाई नॉट, आई मीन अगर वो ऐसा है तो आई मीन वी शुड डू इट ना, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलिए, थैंक्स गाइस, थैंक्स एवरीबडी। आई विल बी लाइव नेक्स्ट सैटरडे 1 p.m. एंड थैंक्स, एंड इन केस नीडेड आई विल कम लाइव बिफोर, इन केस मार्केट में कुछ टर्बुलेंस हुआ और मुझे लगा कि दिस इज अ नीड, आई विल कम। The t-shirt I am wearing, the same will be delivered to you who could kind of submit their interest till last Sunday. So मैं absolutely वो आप आई थिंक हमारे पास जितने भी इंटरेस्ट आए थे वो हमने कैप्चर कर लिए हैं, बट उसके बाद आई थिंक थोड़ा ये मंथ क्लोजिंग हो रहा है, हम अप्रैल में भेज पाएंगे आपको, अप्रैल मिड तक आपको मिल जाएंगे, अप्रैल मिड तक ऐसा, या टोकन ऑफ आर स्मॉल गिफ्ट। चलिए, थैंक यू, बाय। राजपूत ने फाइनली बोला भाई बंद करो इसको, बहुत देर हो गई। चलो, गुड, थैंक्स राजपूत, थैंक्स ओवन, हैव अ गुड डे टू यू टू गाइस, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड।